Good evening, all. Welcome to Protrainy's site engineering demo session. We welcome our expert, Mr. Anudesh Sachin. So you can continue. All right, thank you. Hey, good evening, everyone. Welcome to Protrainy. Welcome to this demo session on site engineering. In this course, you're gonna first of all let me know just quickly. I'm audible to everyone properly. It's loud and clear. Yes, sir, you're audible. All right, that's great. Thank you very much, guys. Okay, guys. So in this course, you are gonna learn about all the basic things you should know actually before starting your career in the construction industry. If you are a fresher, or even you are having an years of experience, like 1 year, maybe 2 year, you are a beginner kind of, or you want to recall your concept related to construction industry, related to site engineering, you must should join this course. And my name is Anudesh Sachan. I have more than 4 years of experience working in construction industry, worked with a lot of different companies, started my career as a site execution engineer, as a site engineer, as generally people does. Worked as quantity surveyor, moved on to planning, and currently working as an engineer where we are just empowering the construction industry with the IT technologies as well. All right, so let me just quickly start the session. And today in this demo session, I'll give you a demonstration like what you're gonna learn in this course. We will discuss about those topics in a brief, what actually is the construction industry and how the project goes on, like what are the different phases by which a construction project goes on. And then we will move towards one of the topic listed out here, and we'll discuss in a detail about that. And that's gonna be like our demo session for today. So let's get us started, guys. On the very first slide, if you'll see, we have all these topics to be covered in this entire course, right? Let me just quickly turn my language as well, switch to the different language as well. We'll be covering this course in English and Hindi as well, right? So, uh, people who are not very good in English, don't be worry about this, right? It will be a bilanguage course, right? We'll be studying these all concepts in English and Hindi as well, right? So first of all, we'll have introduction about this entire course. What are the different topics which you are going to cover, right? Then we'll have introduction about the common instruments, like जितने भी कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते हैं, चाहे वो सर्वे के वक्त आपका ऑटो लेबल हो या डिफरेंट मशीनरीज हो जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, हाईवेज में, बिल्डिंग्स में यूज होती हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी. you'll get अंडरस्टैंडिंग कि किस इंस्ट्रूमेंट को, किस चीज को क्या बोलते हैं. लाइक जनरली इफ you'll see that like people say JCB, it's not actually the JCB is the company, right? So you'll get to understand about those different instruments and machineries which are being used in the construction, right? Then we'll move towards the very important part, right? Which is important is surveying, how to do the surveying in site, how to do the layout and execution thing, right? Because many times it happens, like if you're a fresher, maybe you join a company, a very few time it happens that you start some project from the very beginning, from the very scratch, right? You sometimes join a project in the mid of that, right, when the execution was going on, so you missed all these things, all these concepts. So it will be very beneficial for you all to understand how survey takes place, right? How to do the layout, marking at site. Then we'll discuss about the safety at site, right? What are the different norms to be followed in safety, right? There will be different experts which will be taking these different topics to you, right? Then bar bending schedule, what actually the bar bending schedule, why it is important, how to do the bar bending schedule of different structure in the construction, in the building structure, or maybe in the highways and all, right? Then quantity estimation, right? Quality of material, shuttering, is scaffolding. What are these all concept, how to do all these things, what are written on the code, is code, right? What according to the is codes, different codes you will discuss, right? क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, उसके बारे में चर्चा होगी. कॉन्क्रीटिंग, किस तरीके से मिक्स डिजाइन काम करते हैं, कब कौन सा मिक्स डिजाइन आपको यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ये सारी चीजें डिस्कस होगी. क्वांटिटी एस्टिमेशन, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन. क्वांटिटी एस्टिमेशन एक बहुत बड़ा
अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है, एक अलग से कोर्स हो जाता है, बट विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट एन आइडिया बेसिकली हाउ द क्वांटिटी एस्टिमेशन वर्क्स आउट, क्या होता है क्वांटिटी एस्टिमेशन, किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको शीट्स बनानी है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी. डिशटरिंग, curing, repair works and all these things. Then moving on to the billing, masonry part, lintel, arches, staircase, doors and window, roofs and flooring. ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे इस कोर्स के बारे में. सो ये कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज में है, या वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या दे हैव लाइक दे आर द बिगिनर having 1, 2, 3 years of experience maybe, or the people who want to recall their basic concept, right? ये सारी चीजें इस कोर्स में इंक्लूडेड है. Then you will have your test, right, your assignments and all. So it's going to be a very, you know, benefited course for you all, everyone, right? So now let's just, okay, extremely sorry guys. Okay, it's going to be a paid course. We'll take all your queries in a few minutes, right? Let me just cover up the topics, guys. Then you can just post your question. Or maybe if you have any question related to the course, you can just continue posting on the chat box. The coordinator will answer different questions for you guys, right? So ये सारे topics होने वाले हैं जो आप इस course में, you know, पढ़ोगे. Okay. अब शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एंड विल डिस्कस अबाउट कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन में किसी भी कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, इट कुड बी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स, राइट, कोई आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, स्टैटप्रो सीख रहे हैं, राइट, ईटैप सीख रहे हैं, ऑटोकैड बेसिक सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, और व्हाटएवर, राइट, क्वांटिटी एस्टिमेशन सीख रहे हैं, एमएसपी प्राइमरी प्लानिंग सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो, राइट, व्हाट एक्चुअली द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स, what are the different things, what are the different key parameters you should note down, you should take care of while मैनेजिंग योर प्रोजेक्ट्स, जिसको बोलते हैं. आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, आप जाकर के एक प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबका गोल है, जितने भी लोग हैं अलग अलग डिजिग्नेशन में वहां पर काम कर रहे हैं, गोल सबका एक ही है, दैट your project should be ultimately a successful project, right? So let us first discuss about what the project is. So a project is a series of related tasks which, when carried out in a correct order, will lead to the completion of a project, generally resulting in the creation of a product or outcome. So project is nothing but a set of activities. Okay, when I say a set of activities, it does not limited only to the set of activities. It means when those set of activities is being executed in a correct order, or you can say with the proper relationship, right, then the project will be successful, right? उन सारी एक्टिविटीज को एक डिफरेंट रिलेशनशिप में एग्जीक्यूट करना. आपको पता है कि सबसे पहले आप कौन सी एक्टिविटी करोगे? यू विल स्टार्ट विद द साइट लेआउट, सॉरी, यू विल स्टार्ट विद द साइट क्लीनिंग वर्क. उसके बाद फिर आप लेआउट कर रहे होगे, ठीक है, उसके बाद आप एक्सकवेशन कर रहे होगे, फिर फाउंडेशन के लिए ट्रेंचेस खोदोगे, एक्सकवेशन करोगे, पीसीसी करोगे, फिर फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करोगे, एंड सो ऑन, राइट? तो ये सारा एक सीक्वेंस है. तो एक्टिविटीज तो आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटीज होंगी, बट उनको एक करेक्ट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है, तब जाकर के आप बोल सकते हो कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा. नाउ अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो कौन कौन से मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं. बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, उसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, नॉन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, सर्विस प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, हाईवे से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, मेट्रो, राइट, एयरपोर्ट्स. ओके, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं. केमिकल सेक्टर से हो सकता है. ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिससे आपका प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ हो सकता है. फिर से एक बात, गोल सबका एक है. यू हैव अ डेफिनेट गोल, ओके, and you want to make you successful, right? Now you must should understand what is the nature of the project, right? आप किसी भी डेजिग्नेशन में काम करते हो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट जो होता है वो कब क्रिटिकल बन जाता है, क्या उसका नेचर होता है, राइट? सो have a specific object to be completed within certain specification, okay? जो आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट
की कॉपी उठा करके देखोगे, आपका जो टेंडर डॉक्यूमेंट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस पे आपको स्पेसिफिकेशंस लिखे होंगे कि भाई ये जनरल स्पेसिफिकेशन है, ओके, ये स्पेशल स्पेसिफिकेशंस है, इसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट को करना है. यू विल हैव योर कंप्लीट स्कोप लिस्टेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? Then have definite start and end date, that is project is time bounded, right? Each and every project have a limitation of time, right? आपको कॉन्ट्रैक्ट में पता होता है कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड सो ऑन. So you have a limitation of time, right? It's a time bonded project. आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें डेफिनेट टाइम होगा, उस डेफिनेट टाइम के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करना है. दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट थिंग और द वेरी फर्स्ट critical parameter is time, okay, which is very important. Next, have funding limitation, that is project is cost bounded. You'll have a certain budget related to your project कि यार 4 करोड़ 5 करोड़ something like this, right? ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी आए उतना पैसा लग जाएगा. So the meaning is your project is also cost bounded, right? Now, consume human and non-human resources, labor, equipment, material, that is project is resource bounded also, right? So again, your project is resource bounded. You have limited resources and you have to complete your project or maybe your activities within that limitation only, right? Okay, now to fulfill the required quality, project is quality bounded. You have to fulfill certain quality parameters as well. So your project is quality bounded. Other than these 4 parameters, you have a lot of others as well, like risk, right? You have safety, okay? Maybe issues somewhere, right? So these are all the critical parameters which are important to be monitored when you say कि मैं अपना प्रोजेक्ट मॉनिटर कर रहा हूं. जब आप बोलते हो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है या आप क्या करते हो जब आप प्लानिंग करते हो या प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हो, तो आप इन्हीं सारे पैरामीटर्स को इंश्योर करते हो कि ये सही डायरेक्शन में सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. आपकी जो कॉस्ट थी, जो आपने प्लान किया था, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट बर्न हो रही है या उससे ज्यादा जा रही है. उससे ज्यादा जा रही है इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, राइट? अगर आपका टारगेट था कि इन दिस 2 months यू विल कंप्लीट 20% ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड इफ इट इज नॉट डन, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं टाइम पे झोल है, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं एंड यू आर यू मस्ट बी इन अ डिले, आप डिले हो गए, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है. अब इनमें से अगर ये जितने भी पैरामीटर्स है दे आर इंटर रिलेटेड, यू कैन से, राइट? अगर इनमें से एक पैरामीटर्स भी डिस्टर्ब होगा, अनदर पैरामीटर विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्टर्ब. अगर आप बोलते हो कि मेरे पास, राइट, मेरे पास टाइम कम बचा है, राइट, जो आपका टाइम था वो डिस्टर्ब हो गया, टाइम आपको कम बचा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि टाइम कम बचा है तो आपको रिसोर्सेज इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो रिसोर्स भी डिस्टर्ब हो गया. रिसोर्सेज इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो ये इस तरीके से ये क्या दिखाता है कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं दे ऑल आर व्हाट इंटर रिलेटेड. ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको ये इंश्योर करके चलना है कि जो भी आपने प्लान किया था, जब आप प्लान वर्सेस एक्चुअल की बात करते हो, तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपकी प्लानिंग थी, जो भी आपकी बेस लाइन थी, उसके हिसाब से आप चल रहे हो. नहीं चल रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके डिले होने के चांसेस है, आपकी कॉस्ट ओवररन होने के चांसेस हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रखना है. किसी भी प्रोजेक्ट में ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. प्रोजेक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली. अब समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फेजेस होती हैं. तो ये इनिशियल फेजेस हैं, राइट? ये सारी आपकी ब्रॉड सेंस में अगर मैं बात करूं तो हाई लेवल ये 4 फेजेस होती हैं आपकी किसी प्रोजेक्ट में: इनिशिएशन, प्लानिंग, execution, controlling, and monitoring. Now, what you do in the initiation stage? In initiation stage, object and initial scope are finalized, right? Financial analysis, stakeholder analysis, and formal approvals, right? In the initiation stage means in the beginning stage, आप डिटेल स्कोप में नहीं जाते हो. आपको पता है कि यहाँ से मुझे एक रोड बनानी है, right? I just need to connect this point A to point B, and for that I need to make a road, right? But you'll not डिसाइड एट द वेरी बिगनिंग कि वहां पर पेमेंट जो होगा वो रिजिट होगा या फ्लेक्सिबल होगा, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लेयर की कितनी थिकनेस होगी. ये सारी चीजों के बारे में इनिशियल लेवल पे आप डिस्कशन नहीं करते हो. आपका डिस्कशन ये सीमित रहता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक
रोड बननी है, राइट। प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है वो भी डिसाइड नहीं होता है, बिकॉज आपने सर्वे नहीं किया होता है, आपको नहीं पता होता है कि कौन सा घर बीच में आएगा या क्या आएगा। यू जस्ट हैव अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड at the very beginning, at the very initial level, yes, we have to connect this point A to point B. So that is the objective, and you can say the very initial scope. Then you'll do the financial analysis कि क्या इस प्रोजेक्ट को पूरा हम कर सकते हैं, उतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। If not, then who is going to fund this project, right? In a similar way, government also decide, or the PSUs or the organization like PWD and all. A budget is being allocated to each and every department, right? PWD है तो उनको एक सालाना बजट होता है एलोकेट। वो देखते हैं कि यार इस साल बजट है हमारे पास इस काम को करवाने के लिए कि नहीं है, राइट? नहीं है तो कौन सी एजेंसी फंड करेगी। सो फाइनेंशियल एनालिसिस इसी तरीके से अगर आप घर बनवा रहे हो तो आपने अगर डिसाइड किया कि यार ऐसा ऐसा ये नक्शा चाहिए मेरे को, तो कितना एक लमसम पैसा लग जाएगा, वो कहाँ से आएगा, लोन लेना पड़ेगा, मेरे पास है या क्या करना है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस गोज ऑन एट द वेरी इनिशियल स्टेज। Stakeholders analysis. Stakeholder analysis means who are going to be the stakeholders involved in your project. You have two kinds of stakeholders, right? Internal and external. Internal stakeholders, like on them project is directly dependent, right? If they'll not work, your project cannot be continued, right? If you can say the people like labor, designers, right, engineers, they can impact your project directly. So these are the internal stakeholders. And the stakeholders are outer external stakeholders, like maybe public sometime, right? Or maybe any agencies. So these are the stakeholders which are involved in the project. Then formal approvals. What are the different formal approvals which are required at the very initial stage? Let's suppose talking to your own house, you need to take an approval from your local government body कि नक्शा पास कर दो यार, right? In the same way, if government is constructing anything, right, maybe a road is going and there is a requirement of a land which is coming under the forest department, then they have to take the NOC from the forest department, right? They have to acquire that land as well, right? So these are all the tasks being executed in the initiation stage. Now coming to the second one, planning. In the planning stage, everything is being done in detail, like detailed scope of the project will be decided, right? Cost estimation and budgets will be done. Okay. Procurement planning. What are the materials to be procured at what particular stage, right? You'll not just purchase everything at the beginning and dump it all, right? It goes stage by stage, that at this particular stage you need this amount of material, right? Then team development, quality assurance, risk analysis, work breakdown of structure, activity and sequence, schedule development. All these part are the planning, right? Work breakdown of structure, activity and sequence, schedule development. This is all the part of planning, right? Or maybe you can say a scheduling. Then this thing moves on to the execution stage. And before execution, the real execution start at the site, there is a stage called award of contract, right? We have written it inside this execution part, but it takes place before this, right? When you actually start the execution at the site, before that, the award of contract takes place. What is contract and how it takes place? Like, let's suppose you have a client, right? You have a client and there's a person contract. Now this client have money with him, but he don't know how to construct some structure maybe, right? Then what he will do, he will float a tender document in the market and he will call out for the people who can work for him, right? And he will list out all his requirement, like the entire scope of the project. I want this in this particular way. These are the key roles I want. These are the key these are the key you can say the members required, like this much experience I required, and these are the scope to be fulfilled, and so on, right? This is going to be the overall budget for this everything, right? Now you as a contractor, or maybe other people like you as well, right? You'll just look into this contract. If you are falling in this criteria, if you are eligible for these, right, your experience is matching, your financial requirements are matching, then definitely you'll fill out this tender, you'll do the rate analysis, and you'll just quote your own rate that this is the amount in which I'll do this particular activity, right? इतने पैसे में मैं करूंगा। अभी कई लोग आए, 5 लोग आए, एक ने बोला कि मैं इस काम को 100 रुपए में। Let's take an example, right? The one person said that I'll do this work in 100 rupees, another one says 80 rupees, one says 150, and another one says 70 rupees. Now
This is not the way, like the person who called out for the lowest price will, who quoted for the lowest one will get the tender, right? It doesn't work like that. They will just see your financial, right, and your technical as well. Both the things will be compared together, and you know out of that evolution criteria, whoever will get the contract, he will be awarded the contract, right? So this is how the contract process works. Then moving on to the execution stage, you have to plan and execute as per the plan. Look into the plan and you have to execute as per that, right? So plan versus actual goes on, right? जो भी आपने प्लान किया था और जो भी आप एक्चुअल में करोगे या उसके हिसाब से करोगे, वो सारी चीजें चलती हैं आपकी। ठीक है, उस टाइम पे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है बहुत सारे लोगों के साथ, जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो। जो इश्यूज आते हैं आपको बीच में, उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हो। डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू डू ऑन द, okay, this is how you do the execution. Okay, then moving on to the controlling and monitoring, right? Then as I told you before, monitoring and controlling में क्या करते हो आप? Monitoring against the plan, जो आपने प्लान किया था, जिसको आप बेसलाइन बोलते हो कि मैं फला फला दिन ये एक्टिविटी करूंगा, इतने परसेंट मेरा इतने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट यू से द प्लान। ठीक है, उसके हिसाब से आप मॉनिटर करते हो अपने एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज को एज पर द प्लान। प्रोग्रेस एनालाइज करते हो, कितने परसेंट आपकी प्रोग्रेस हुई है, कितना आपने प्लान किया था। कैचअप प्लान किसे बोलते हैं? आप डिले हो गए तो उस डिले को किस तरीके से आपको कैच करना है। ओके, कोई स्कोप चेंज हुआ क्लाइंट की ओर से, किस तरीके से उसे मैनेज करना है। क्वालिटी कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस, ये सारी चीजें हैं जो आपकी कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में चलती जाती हैं पैरेलली, राइट? So these are all the stages in a broad sense, right? In a broad sense, which you actually do in the project, right? ये सारी stages हैं आपकी, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। ये सारी चीजें आप परफॉर्म करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर इन स्टेजेस को आप और ड्रिल डाउन करते हो फर्दर, okay, okay, so now if you'll further drill down these stages, these are the stages which will comes up। ये डिटेल्ड स्टेजेस आपके सामने आपको मिलेंगी। कॉन्सेप्ट, प्लानिंग, डिजाइनिंग, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन, commissioning, operation and demolition, right? Now all these stages, concept, planning, designing, award of contract, are called as pre-construction activities, right? And then execution, commissioning during construction activities, and after that operation and demolition comes under post construction। okay, तो उन स्टेजेस को अगर आप और फर्दर ड्रिल डाउन करते हो तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करें, राइट, so all these are the stages which you have looked upon। Concept, it is a thought or say a proposal that we need a government school in our city, and for that we need to construct a building। It's simple a concept, right? एक simple सा concept, right? कि आपके दिमाग में आया कि यार आप गवर्नमेंट हो, right? Now you thought like we need an primary school maybe at a particular place। For that what you need, you building, right? क्या होगा, कितने क्लासरूम होंगे, क्या एमिनिटीज वहां पर अवेलेबल होंगी, स्विमिंग पूल होगा क्या स्कूल में, क्या होगा, एक्स वाई जी इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि यहाँ पर स्कूल की आवश्यकता है, दैट्स इट, दैट इज ओनली द कॉन्सेप्ट। कितना एरिया अवेलेबल है, ऑल दोस थॉट्स विल कम लेटर ऑन। ओके, पहले तो कॉन्सेप्ट आया, उस बाद further that the concept is now planning, where the project location, estimated cost, resources required, and further planning and scheduling is worked out। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब आप ये ढूंढोगे, हाँ ठीक है, कहाँ पर लैंड अवेलेबल है, कितना लैंड अवेलेबल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, क्या अम्यूनिटीज होंगी, वो आपकी कॉस्ट, ये सारी चीजें आप करते हो। उसके बाद आप मूव करते हो डिजाइन पे। Until unless the detailed scope is not defined in the planning stage, you cannot move directly to the designing phase। उसके लिए आपको स्कोप तो चाहिए ना यार, कि मुझे ये चीजें करवानी है, ये चीजें चाहिए, तब जाकर के आप उस चीज को क्या कर पाओगे, डिजाइन कर पाओगे, राइट? देन इन द डिजाइन फेज, followed by the planning, the designing done।
ठीक है, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर होती है उसकी हेल्प से आप डिजाइनिंग करते हो. And then award of contract. As I told you before, the person or the organization that initiate a construction project is called as client. He engages the construction team and pays for the cost of doing the work. At the end of the project, the finished project becomes his position. The person or organization that bills on behalf of the client in return of a payment is called as contractor. The client and the contractor usually sign an agreement with respect to the work. This agreement is known as contract. एक लीगल डॉक्यूमेंट, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे जाते हैं कि भाई ये काम आपको करना है और मैं आपको इसकी एवज में ये ऐसे ऐसे पैसे दूंगा. उसमें सारी चीजें लिस्टेड होती हैं, कब आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा, कब आप कौन सा माइलस्टोन अचीव कर रहे होगे, क्या स्कोप है आपका, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या की चीजें हैं, की पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको फुलफिल करना है, कैसे आपका एवोल्यूशन होगा, क्या फॉर्मूला यूज हो रहा होगा. each and every detail is being mentioned in the contract. And then execution works is started, right? And then commissioning, right? What is commissioning? Project commissioning is the process of assuring that all system and component of a building or the industrial plant are designed, installed, tested, operated, and maintained according to the operational requirement of the owner or the final client. Commissioning का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने बना ली, एग्जीक्यूट किया, एक बिल्डिंग बना ली, सारी चीजें कर ली, ठीक है, अब उसको, वो सारी चीजें जो आपने की हैं वो डिजाइन पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं कि नहीं, उनका टेस्ट करना, राइट, वो ऑपरेशनल लायक है या नहीं है, जिस भी चीज के लिए आपने उन चीजों का लगाया था वो अपनी ऑपरेशनल नीड को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है. ओके, ये सारी चीजें टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का पार्ट होती हैं. देन यू विल ओपन अप द प्रोजेक्ट फॉर द ऑपरेशन. अगर आपने एक रोड बनाई है तो उसको पब्लिक के लिए आप खोल दोगे, व्हीकल्स उसके ऊपर से जा सकते हैं. एक बिल्डिंग बनाई है, सो जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी ऑपरेशनल नीड के लिए वो कंस्ट्रक्ट हुई थी, उसके लिए आप उसे खोल देते हो. वन मोर स्टेज कम्स अप आफ्टर ऑपरेशन इज डेमोलिशन. जब उसका सर्विस पीरियड पूरा हो जाता है तब आप उसे क्या कर देते हो, डिमोलिश कर देते हो, और वहां पे फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनता है. ऑलराइट, तो ये सारी स्टेजेस हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट. ये सारी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस होती हैं, राइट, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो जाता है. ओके, होप यू गाइज अंडरस्टूड. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, ठीक है. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट चेंज द पीपीटी. ओके, इसके बाद अगर हम एक किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, राइट, तो कौन कौन सी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जनरली जो हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, राइट. यहाँ पर आप देखोगे कि ये सारी सीक्वेंस से एक्टिविटीज लिखी हुई है. साइट क्लीनिंग, ठीक है, आप साइट क्लीनिंग करते हो, वहां पर जो अंडुलेशन है उसको खत्म करते हो, वहां पे जो वेजिटेशन है उसको हटाते हो. फिर उसके बाद क्या करते हो, वहां पे लेआउट करते हो, सर्वेइंग करते हो, राइट, उस टाइम पे. फिर एक्सकवेशन फॉर द फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए ट्रेंचेस खोदते हो, जो भी डेप्थ दी होती है उसके हिसाब से. इफ रिक्वायर्ड, उस डेप्थ के अंदर आप, उस ट्रेंचेस के अंदर आप सैंड फिलिंग करते हो, पीसीसी करते हो. फिर शटरिंग, फिर उसके बाद आप रेनफोर्समेंट और शटरिंग लगाते हो फुटिंग्स के लिए. देन कॉन्क्रीटिंग करते हो आप. फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से पेडेस्ट्रियल कॉलम के लिए आप काम करना स्टार्ट करते हो, राइट. यू विल स्टार्ट फॉर द पेडेस्ट्रियल कॉलम, इसी तरीके से रेनफोर्समेंट लगाते हो, शटरिंग लगाते हो, कॉन्क्रीटिंग करते हो, और फिर उसके बाद बैकफिलिंग करते हो. तो जो ग्राउंड सरफेस थी जहां से आपने इस चीज को करना स्टार्ट किया, जहां पे भी आपका ग्राउंड सरफेस था, अभी ड्राइंग देखेंगे उसमें और ज्यादा क्लियर होगा. इस ग्राउंड लेवल से आपने ट्रेंच खोदा, एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, फुटिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया, राइट, लाइक दिस. पेडेस्ट्रियल कॉलम बना, ये सारी चीजें हुई. अब फिर से ये जो जगह थी, ये जो बची हुई जगह थी, यहाँ पर फिलिंग कर दी, बैक फिलिंग, इसको कहते हैं बैक फिलिंग. वापस से आप इस लेवल को अचीव कर गए. उसके बाद फिर क्या करते हो आप, एक्सिक्यूट
you can exclude this one and you can do the PCC, right? आप PCC कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ से फिर से अब आप ग्राउंड बीम बनाना चालू करते हो इफ देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड बीम इन योर ड्राइंग। अगर ड्राइंग में ग्राउंड बीम नहीं दी हुई है, सीधे आपको प्लिंथ बीम दी गई है, तो आप प्लिंथ बीम बनाओगे। द थिंग इज कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज जाती हैं, राइट? ग्राउंड बीम बनाते हो आप, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क करोगे ऊपर तक, किस लेवल तक? प्लिंथ लेवल तक। डीपीसी करोगे वहां पर, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। फिर बैकफिलिंग करोगे प्लिंथ लेवल पे, और अगर जरूरत है तो वहां पर आप प्लिंथ बीम बनाओगे, नहीं है जरूरत तो वहां पर नहीं बनाओगे। फिर उसके बाद आप पीसीसी करते हो प्लिंथ लेवल पे, देन you'll again do the brickwork to the superstructure। अब यहां से आपने क्या किया था? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपने ग्राउंड बीम बनाई, ठीक। यहां से फिर आपने ब्रिकवर्क करना चालू किया, राइट? इस तरीके से आपने ब्रिकवर्क करना चालू किया और फिर यहाँ पर पीसीसी किया। ओके, नाउ दिस इज द प्लिंथ लेवल। मान लेता हूं कि लगभग 1 मीटर ऊंचाई पे ग्राउंड से आपका ये प्लिंथ लेवल आ गया, आपके पास प्लिंथ लेवल अचीव हो गया। उसके बाद फिर से आप ब्रिकवर्क करना स्टार्ट करते हो सुपर स्ट्रक्चर के लिए। फिर सील बैंड कंक्रीटिंग एंड शटरिंग, डोर्स और विंडोज का जो लेवल होता है वहां पर आप सील बैंड प्रोवाइड करते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रिक वर्क अप टू द लिंटल लेवल, लिंटल ऊपर, ठीक है, वहां पर आप वहां तक ब्रिक वर्क करते हो। लिंटल की शटरिंग एंड रेनफोर्समेंट होती है, कंक्रीटिंग होती है। फिर स्लैब लेवल तक जाकर के आप ब्रिक वर्क करते हो। फिर आपकी स्लैब बीम और स्लैब की कास्टिंग होती है, शटरिंग एंड कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब बीम एंड स्लैब, एंड देन प्लास्टर एंड फिनिशिंग वर्क, राइट? इस तरीके से एक नॉर्मल वे में अगर मैं बात करता हूं, ऑल्दो जब आप डिटेल में क्वांटिटी एस्टिमेशन में पढ़ोगे तो आप एक एक चीज के बारे में डिटेल में एस्टिमेशन करोगे कि एक पूरी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से उसकी एस्टिमेशन होती है। इन सारी चीजों के बाद आप डिस्कस करोगे। अभी आपको सिर्फ 19 एक्टिविटीज यहाँ पर हाई लेवल एक्टिविटीज लिस्टेड हैं, but when we will study about the quantity estimation, we'll go deep inside, और वहां पर आप देखोगे कि it goes till like more than 50 activities kind of work, like more than 60 something, इतने आपको चीजें दिखाई देंगी वहां पर। बट ये एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन थी आपको कि इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको एग्जीक्यूट करनी होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक ड्राइंग देखोगे तो इस तरीके से आपको सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग दिखती है, ठीक, कि इस तरीके से मार्किंग, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी फुटिंग्स है, F1 F2 टाइप्स ऑफ फुटिंग, राइट? दीज आर द ग्रिड लाइन, दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइन। जब आप लेआउट पढ़ोगे तो किस तरीके से इस ड्राइंग की हेल्प से, इस सेंटर लाइन ड्राइंग की हेल्प से किस तरीके से ग्राउंड में रियल में आपको लेआउट करवाना होता है, किस तरीके से आप अपने प्लॉट की मार्किंग करते हो, कैसे वहां पर फुटिंग और कॉलम्स की मार्किंग करते हो, ताकि आप वहां पर सही जगह पर ट्रेंचेस खोद पाओ। ऐसा ना हो कि आपकी जो प्लॉट थी आपने किसी दूसरे के प्लॉट में जाकर के अपनी फुटिंग का गड्ढा खोद दिया। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर लाइन ड्राइंग लेआउट पढ़ते किस तरीके से है, किस तरीके से आप वहां पर जाकर के लेआउट परफॉर्म करवाएंगे। ये सारी चीजें आप सीखोगे जब आप लेआउट करना सीखोगे, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना सीखोगे, तो आपको ड्राइंग रीड करना अपने आप आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो ये ग्राउंड लेवल था, इसके नीचे ये 2 मीटर की डेप्थ थी, और फिर यहाँ पर ट्रेंच है, ये आपके फुटिंग के डायमेंशंस दिए हुए हैं नीचे, यहाँ पर फुटिंग की रेनफोर्समेंट डिटेल दी गई है। ओके, क्रॉस सेक्शन व्यू है, यहाँ से आप देखोगे तो टॉप व्यू दिया गया है, यहाँ पर कॉलम की जानकारी दी गई है, कॉलम की रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, एंड कॉलम का जो लेआउट है वो भी दिया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक ड्राइंग में आपको देखने को मिल रही है। व्हेन यू विल स्टडी द क्वांटिटी एस्टिमेशन, डिटेल में आप डिटेल में आप बहुत सारी ड्राइंग्स का यूज करोगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको each and everything will get clear when you will study about the quantity estimation. Okay, so this was a brief idea about the course content जो कि आप पढ़ने वाले हो इस is in this entire course. Okay, all right, so we'll continue in English as well for some time, right? Now let me just begin with a very basic thing like layout के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है लेआउट, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना होता है।
उसके बाद हम जब रियल में कोर्स में पढ़ रहे होंगे चीजों को, विल सी अबाउट लाइक कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आप लेआउट परफॉर्म करते हो. सो व्हेन आई से अ लेआउट, आप यहाँ पर देखोगे कि सेम वैसा ही चीज आपको दिख रहा है जैसा कि आप सेंटर लाइन ड्राइंग में देख पा रहे थे. इस तरीके से आपको लेआउट परफॉर्म करना होता है, राइट. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, दे नो लाइक, अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि आपके पास ऑटो लेबल मशीन नहीं, यू डोंट हैव ऑटो लेबल मशीन, राइट, यू डोंट हैव गुनिया जिसको आप बोलते हो, राइट, you just have measurement tape with you. Now how you will perform the layout, how you will do the layout, how you'll do the marking at the site with the help of drawing, right? It's quite critical, right? But I'll make this very simple. You all know that when you say gunya method, right, or when you say 3 4 5, right, what is all this? These all are using this one concept, which is Pythagoras theorem, right? Let's talk about this. So what you do actually is, right, 3 square plus 4 square and under root of this, it will give you 5 ultimately, right? So this 3 4 5 is nothing but the concept of Pythagoras theorem, right? What you need to remember is, in Pythagoras theorem, this is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse, and the formula for the hypotenuse is this, under root of p square plus b square. Now if you only know this formula, with the help of measurement tape only, you can do the entire layout at the site, right? Just get the drawing and start, you know, this concept. With the help of this concept, you'll do the layout, right? Let's take an example. Let's take this scenario. This is a road going on right now. We'll discuss on the course later, like if the road goes like this, right, it's not the straight, how you will do the marking, how you'll do the layout. But that's not the scope of this lecture. Let's discuss about this simple concept. Like if this is a layout, sorry, if this is a road and this is a benchmark, and you have been given certain information, like from this benchmark, the depth of your plot or the area where you need to do the construction is at the depth of 4 meters. If you'll say this distance is 4 meters, okay, and now the size of your plot is 15 into 10, which you can see from here, 15 meter and 10 meter, right? Now I'll ask you that go and do the layout of my plot. Now what is the critical thing here, right? You know that the distance from this point is 4 meters, okay, but you have also learned in mathematics, like you can just draw infinite line with the help of one single point. So now it's critical to make a line of 90 degree, okay. This is also a 4 meter, this is also going to be a 4 meter, maybe somewhere like here it will, right? And like this also, it will be a 4 meter of distance, right, while the angle is not 90 degree. So it may happen that you takes it like this 4 meter, and you'll draw your plot marking like this. Sorry, I'm not able to draw the correct straight line, but what I'm trying to say is that if you were unable to make a 90-degree angle, you'll miss out, right? You will just go and make the marking in this road as well. तो जो आपका रियल प्लॉट था, उससे आप क्या चले जाओगे, बाहर चले जाओगे, राइट? तो आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है? अब ये एंगल बनाना ही सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए. मेरे पास कोई मशीन नहीं है, ऑटो लेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है. हाउ आई विल मेक द 90 डिग्री एंगल? टोटल स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं, राइट? सो द वेरी बेसिक थिंग इज Pythagoras theorem. Now what I'm doing here is, let's see, this is the base, and the base is what? 10. This is the perpendicular, and what the perpendicular is, 4. Now if this is 10 and this is 4, what is going to be this hypotenuse? This is going to be 10.77. If you'll calculate with the help of Pythagoras theorem, this hypotenuse is going to be 10.77. All right, and now this is a 90-degree angle. Obviously this is going to be a 90-degree angle because this is a Pythagoras theorem, right? Now what you need to do, okay, so that you'll get exactly this point. Now this is a measurement tape, okay, and I'll say this is a point A, this is a point B, and this is a point C. Now follow the steps. What you need to do is take a measurement tape and put the first corner, this one, this hook, just put a nail here and just put this hook here inside the nail, okay. And now this point will be at A. The
this point, this corner of the tape, measurement tape will be at point A. Okay. Now this 10 meter is known to you, and since this road is straight, you can just easily mark this point B 10 meter away from this A point. So this is going to be the point B, right? This is going to be the point B. Okay. Now I'll say that this is point B somewhere, right? This point I'll make on B, right? Right. So what I'm going to do is, this is 10.77 and this is 4. So I'll mark on another point 10.77. Okay. So I'll say this is point C. The distance between A and C is 10.77. And now from C to B is 4 meter. Okay. So 10.77 and 4. So total what? 14.77 meter. You will open a tape 14.77 meter and you'll put point A here, you'll put point B here. So now tape will be like this. Okay, it will not be the straight. Tape will be like this, B, and it will goes on like this. Okay, somewhere in between this, you'll have your point C. Okay, now what you need to do is take point C. Let's suppose this is point C, and move from this point B and go straight here and go and mark this point C here. Now, how you will how you'll ensure that, when you are doing this exercise, you are constructing a 90-degree angle here. यही तो हमारी चीज है जो हमें पता लगानी है कि कैसे हम इंश्योर करें कि ये सारी जो हम चीज कर रहे हैं इससे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है इस चीज को करने का. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ओके, व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे होगे, ठीक है, जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे होगे, तो जब आपका टेप, मेजरमेंट टेप जो है वो ठीक इस तरीके से जाकर के रखाएगा. ठीक है, ये डिस्टेंस होगी 4 मीटर और ये डिस्टेंस होगी 10.77. तभी ये सी पॉइंट जो बीच का है वो जब यहां रखाएगा, सो दिस साइड एंड दिस साइड, ये दोनों ही जो टेप के हिस्से हैं, दे विल बी स्ट्रेट एंड टाइट. इफ दीज आर स्ट्रेट एंड टाइट, यू विल गेट दिस एंगल एज 90 डिग्री. लेट्स सपोज करो कि ये ऐसा गया होता, तो क्या इस कंडीशन में खुद सोचो, ये वाला जो पोर्शन है टेप का, ये स्ट्रेट और टाइट रहता? ये टाइट रहता ही नहीं, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं. इसी तरीके से अगर ये एंगल ऐसा बनता, तो क्या ये वाला हिस्सा टाइट होता? ये टाइट होता ही नहीं, बिकॉज बीच में फिर से 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता. बीच में 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब ये दोनों के दोनों टेप के हिस्से टाइट होंगे, स्ट्रेट होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ 90 डिग्री एंगल. और एक बार आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, राइट, व्हाट, आप इस तरीके से फिर सारी जगह पर क्या कर सकते हो? लेआउट परफॉर्म कर सकते हो. Getting it? Now you have made 90 degree angle here. अब आप यहां से कंसीडर कर लो, पाइथागोरस थ्योरम यहां से लगा दो, you will get this point also. फिर आप इसको एंगल मान लो 90 डिग्री का. ओके, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. So this is how you can mark these all 4 points and you'll get a boundary, closed boundary. And after the closed boundary, you can do all these things. Okay, this which we'll discuss in a later session. So this is a basic like how you will do the layout. Okay. Now moving towards the next thing, which is quite important, I would say. Okay. When you study about the estimation, okay, जब आप estimation के बारे में पढ़ोगे, so this is how we will do. हम इस तरीके से पूरी की पूरी estimation sheet बना रहे होंगे with the help of different drawings. जैसे कि एक drawing आपके पास ये है, and we have lot of other drawings as well, okay, which we'll see. तो आप इनकी हेल्प से ये पूरा का पूरा estimation sheet complete कर रहोगे. And if you'll see on this estimation sheet, we have more than 50 plus item. We have 53. You'll be studying everything, right, from sanitary item to everything, stone work, right, how to estimate the doors, window, plaster, paint, right, concrete, everything. And with the help of this thing, what you are going to do is, आप ये estimation पूरा करने के बाद इस तरीके से एक पूरा BOQ बनाओगे, bill of quantity, which is the part of tender document. किस तरीके से ये BOQ बनाना है, क्या होता है SOR, शेड्यूल ऑफ रेट, ठीक है, BOQ आइटम्स क्या होते हैं, बिलिंग में आप पढ़ोगे किस तरीके से आपको बिल्स क्रिएट करने हैं. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू ऑल दीज थिंग्स.
Okay, so when further we'll discuss about the billing, we'll understand about the very important concepts which are in billing, like reconciliation क्या होता है, material reconciliation किस तरीके से आप bills create करते हो, summary of payment कैसे बनाते हो, certificate of payments कैसे बनाते हो, mobilization recovery क्या होती है, क्या होता है mobilization, right? We'll study about all these things, measurement sheet, bill abstract, bill form, everything you gonna study about. DPR किस तरीके से बनाते हैं, लेबर प्राइस एस्केलेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है, राइट? किस तरीके से, मतलब प्राइस एस्केलेशन जो बोलते हो आप, वो चेंज ऑर्डर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा आइटम्स, सब्स्टिट्यूट आइटम्स, व्हाट आर दीज ऑल कॉल्ड, राइट? you'll study about the secure advance, mobilization advance, right? Important tender clause, LOI क्या होता है, LOA क्या होता है, mobilization, right? Completion period and everything, right? Types of bill, RA bills क्या होते हैं, कौन कौन से documents लगाने होते हैं, all these, basic things, which not the basic I would say, but very important things in billing you'll study about, right? एस्टिमेशन इस तरीके से पढ़ोगे आप, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जिसकी हेल्प से हम एस्टिमेशन कर रहे होंगे पूरा, राइट? आप लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, आई एस कोड 1200 के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आई एस कोड 1200 के साथ साथ हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली डू द एस्टिमेशंस, राइट? बीबीएस शीट, बार बेंडिंग शीट भी आप इस तरीके से बना रहे होगे, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर बार बेंडिंग की शेड्यूल की शीट बनती है, इस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट लगाने होंगे, जैसे अभी आपने एस्टिमेशन की शीट देखी उसी तरीके से आप यहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल भी देख रहे होगे, राइट? इस तरीके से ये एस्टिमेशन था आपके पास, ये बीओक्यू था, इस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल थी, राइट? तो एक कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर का क्वांटिटी एस्टिमेशन और बार बेंडिंग शेड्यूल करना आप सीखोगे, right? So this is all which we are going to cover in this course. It was just a demo session, okay? So I've just given you an introduction about the things like what you are going to study in this entire course, right? जो भी बाकी की information थी, I think parallelly आपको chat में मिल गई है. If you even have any question related to the things, you can just post on the chat box and we'll clear it out. That's all from mine. Thank you guys. Thank you very much. If you have any queries, just post on the chat box. We'll just answer you all queries related to course or maybe other information if you want.